Okay, the visitors, there aren't many of them, so there aren't many conscious anyway. Come around the home kundam and come this side. You will be given these shankams. You will take the shankam inside and perform abhishekam only to Ambai. Okay, come around. Tiruchitrambalam Namah Shivaya Valha Nadandal Valha இமைப்பொருதும் என்னஞ்சில் நின்காதான் தாழ்வாழ்க கோகலி ஆண்ட குருமனிதன் தாழ்வாழ்க ஆகமம் ஆகி நின்று அண்டிப்பான் தாழ்வாழ்க ஏகன்னன் ஏகன் நிறைவன்னடி வாழ்க வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தனடி வெல்க பிறப்பழுக்கும் பிஞ்சகன்னன் பெய்கழல்கள் வெல்க புறத்தார்க்கு செய்யோன்னன் பூங்கழல்கள் வெல்க பக்கரங்குவிவாருள் பகிழும் கோங்கழல்கள் வெல்க சிறங்குவிவாரோங்குவிக்கும் சீரோன்கழல் வெல்க ஈசனடி போற்றி எந்தையடி போற்றி தேசனடி போற்றி சிவன் சேவடி போற்றி நெய்யத்தே நின்ற நிமலனடி போற்றி மாய பிறப்பருக்கும் மண்டனடி போற்றி சீரார் பெருந்துரை நம் தேவனடி போற்றி ஆராத இன்பம் மருளும் மலை போற்றி சிவனவனின் சிந்தையுள் நின்ற அதனால் அவனருளானே அவன் தாழ் வணங்கி சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை முன்னை வினை முழுதும் மோய புரை பண்ணியான் கண்ணுதலான் தன் கருணை கண் காட்ட வந்தை எண்ணுதற்கு எட்டாய் எழிதார் கண்டிரைஞ்சி விண்ணிறைந்து மண்டிரைந்து மிக்காய் விளங்கொழியாய் எண்ணிறைந்து என்னை நாடானே நின் பெரும் சீர் பொல்லா விலகேன் புகழுமாறு ஒன்றறியேன் பொல்லாகி போடாய் புழுவாய் மயமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லா மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல்லசுரராகி முனிவராய் தேவராய் சென்றார் நின்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்திடைத்தேன் பெருமான் பொன்மணிகள் கண்டின்ற வீடுற்றேன் ஓங்கி ஆழ்நகன்றியனே மெய்யாய் தனியாய் ஏமாந்தனாம் விமலம் பொய்யாயினெல்லாம் போயகல வந்தருளி மெய்ஞானமாகி மிளிர்கின்ற மேற்றுளரே ஞானம் இல்லாதே நின்பப் பெருமானே அஞ்ஞானம் தந்தை அகழ்விக்கும் நல்லறிவே ஆக்கம் மலவிருதி எல்லாயனை துலகும் ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள் தருவாய் போக்குவாய் என்னை புகுவிப்பாய் நின் தொழுமின் நாற்றத்தின் நேரியாய் செய்யாய் தனிகானே மகற்ற மனம் கலிய நின்ற மறையோனே கரந்த பால் கண்டருடே நிகழனார் போல சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் தேனூரி நின்று பிறந்த பிறப்பருக்கும் எங்கள் பெருமான் நிறங்களோர் ஐந்துடையாய் விண்ணோரேற்ற மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான் வல்வினையேன் தன்னை மறைந்திட மூழிய மாய இருளை அறம்பாவம் என்றும் மருங்கயிற்றார் கட்டி புறத்தோல் போற்றெங்கும் புழுவழுக்க மூடி மலம் சோறும் 9 வாயில் குடினை மலங்க புலனைந்தும் வஞ்சனையை செய்ய விலங்க மனத்தால் விமலா உனக்கு
கலந்த அன்பாகியே கசிந்து உள்ளுருகும் நலம் தானிராத சிறியேற்கு நல்கி நிலம் தன்மேல் வந்தருளி நீர் கலந்த காட்டி நாயிற்கணையாய் கிடந்த அடியேற்கு தாயிற் சிறந்த தயவான தத்துவனே மாசற்ற சோதி வலன மலச்சுடனே தேசனே தேனாரமுதே சிவபுரனே பாசமாம் பச்சரத்து பாலிக்கும் மாரியனே நேச அருள் புரிந்த நெஞ்சில் வஞ்சம் கெட பேராது நின்ற பெரும் கருணை பேராறு அமுதே அளவிலா பெம்மானே உள்ளத்துள்ளிக்கும் மொழியானே நீராயுருக்கிய நாருயிராய் நின்றாயினே இன்பமும் துன்பமும் உள்ளானே அன்பருக்கு அன்பனே யாவையுமாய் அன்பையுமா சோதியனே துண்டிருளே தோன்ற பெருமையனே ஆதியனே அந்தம் நடுவாகி எல்லானே தன்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே கூட்டமே ஞானத்தால் கொண்டுணர்வார்த்தம் கருத்தின் நோக்கரிய நோக்கிய நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே போக்கும் வரவும் புனர்விழா புண்ணியனே காக்கும் என் காவலனே காண்பைய பேருளியே ஆகற்றின்ம வல்லவே அத்தாவி காய்கின்ற தோற்றச்சுடருளியாய் சொல்லாதன்றுணர்வாய் மாற்றமா வையகத்தின் வெவ்வேறு வந்தறிவாம் தேற்றனே தேற்ற தெளிவேகன் சிந்தனையும் ஊற்றான உன்னாரமுதே உடையானே வேற்று விகாத விடக்குடம்பினுள் கிடப்பன் அகற்றேனம் ஐயா அரணேயோ என்றென்று போற்றி புகழி நின்று பொய் கேட்டுமையானார் நீண்டிங்கு வந்து வினை பிறவி சாரானே கள்ள புலன்மை கட்டழிக்க வெல்வானே நள்ளிருளில் நட்ட பயிராடும் நாதனே திண்ணையுள் கோத்தையை தென்பாடி நாதானே அல்லல் பிறவி அறுப்பானேயோ என்று சன்னக்கு அரியானை சந்தித்து பணிக்கு சொல்லிய பாட்டின் பொருளுணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வ சிவபுரத்தினுள்ளா சிவதனிக்கு பல்லோரு வேற்ற பணிந்து திருற்றமனம் क्रीं हुं हुं ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं स्वाहा हरो हरा
रसानंदकरे परशुरात्मे सच्छन्दस्तृणामत्मञ्जेहि कुलनायिके आकुलस्तामृताकारे शुद्धज्ञानकरे परे अमृतत्वं निधेहि अस्मिन् वस्तुनिक्लिन्नरूपिणी ऐं वद वद वाग्वाजिनी ऐं क्लीं क्लिन्ने क्लेदिनि क्लेदय महाक्षोभं कुरु कुरु क्लीं सौं सौः महालक्ष्मीश्वरी परमस्वामिनी ऊर्ध्वशून्यप्रवाहिनी सोमसूर्याग्निभक्षिणी परमाकाशभासुरे आगच्छ विष विषपात्रं प्रतिगृह्ण हुं फट् स्वाहा पुण्यं जुहोमि स्वाहा पापं जुहोमि स्वाहा कृत्यं जुहोमि स्वाहा कृत्यं जुहोमि स्वाहा संकल्पं जुहोमि स्वाहा विकल्पं जुहोमि स्वाहा धर्मं जुहोमि स्वाहा धर्मं जुहोमि स्वाहा क ईडक्रीं सकलहरीं सकलक्रीं अधर्मं जुहोमि वौषिट इदः पूर्वप्राणबुद्धिदे धर्मादिगातः जागृत्स्वप्नसुप्त्यावस्थासु मनसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्यां पद्भ्यां मुद्रेण शिष्णा यत्स्मृतं यदुक्तं यत्कृतं तत्सर्वं ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा आर्द्रं ज्वलति ज्योतिरहमस्मि ज्योतिर्ज्वलति ब्रह्माहमस्मि योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमेवाहं मां जुहोमि स्वाहा ॐ ह्रीं ह्रौं झुं सः अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरी अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावये श्रावये स्वाहा ॐ ह्रीं श्रौं झुं सः अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरी अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावये श्रावये स्वाहा ॐ ह्रीं श्रौं झुं सः अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरी अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावये श्रावये स्वाहा
us all get back to Yagnashala. I'll come there. We will do the Lalita Sahasranama Parayanam there. And once the Alankaram is complete, we'll come back. Please. Sandhi Puja Pandrang. Trikhanda Mudra. Om Shuklambradharam Vishnum Jayavarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye. Dram Dream Kleem Bloom Saha Dattathreyam Digambaram Sandhyaranam Tarpayamina Dattathreyaya Namah Sraim Askalarim Astasoh Mahapadmavanantastam Matru Chaitanya Rupinam Shvetarunapadam Vande Ekhe Gurottamam Shri Gurum Patni Sametam Sakala Gurudevata Parampara Sametam Dattatreya Rupena Avahayami Sthayami Sambhujayami Namah Om Vishwam Darpana Drishyamana Nagari Tulyam Nijantargatam Pashyannatma Nimayaya Bhairivodbhutam Yatha Nidraya Yat Sakshat Kurute Prabodha Samaye Swatmanamevadvayam Tasmai Shri Gurumurtaye Namayidam Shri Dakshinamurtaye Yasyaiva Sphuranam Sadatmagama Satkarmarthakam Bhasate Sakshat Tattvamasi Vedavachasat Yo Bodhayatyashritan Yat Sakshat Karanat Bhavenna Punaravrittirbhavam Bhonidho Tasmai Shri Gurumurtaye Namayidam Shri Dakshinamurtaye Nana Chidragatodara Sthita Mahadeepa Prabhabhaswaram Jnanam Yasya Dujachuradikarana Bahispandate Janami Jitameva Bhantamanubhatyetat Samastam Jagad Tasmai Shri Gurumurtaye Namayidam Shri Dakshinamurtaye Rahugrasta Divakarendu Sadrisho Maya Samachhadanat Sanmatrah Karanopasamharanato Yobhut Sushuktah Puman Pragaswapsamiti Prabodha Samaye Yah Pratyabhignayate Tasmai Shri Gurumurtaye Namayidam Shri Dakshinamurtaye. Why don't you sit? Vishwam Pashyati Karyakaranataya Swaswami Sambandhatah Shishyacharya Tathaiva Pitruputradhyatmana Bhedatah Swapne Jagritivaya Esha Purusho Maya Paribhramitah Tasmai Shri Gurumurtaye Namayidam Shri Dakshinamurtaye. Bhurambhasya nalo nilombaramaharnato himam shuhpuman Ityabhati characharatmakamidam yasyaiva murtyashtakam Nanyat kinchana vidyate vimrushatan yasmat parasmat vibho Tasmai Shri Gurumurtaye Namayidam Shri Dakshinamurtaye. Sarvatmattvamidi sphutikritamidam yasmadamushmim stave Tenasya shravanat tadarthamananat dhyanatcha sankirtanat Sarvatmattva-mahavibhuti sahitam syadishwaratvam swatah Siddhyet tatpunarashtada parinatam chaishwaryam avyahatam. Om Asya Shri Lalita Divya Rahasya Sahasranama Stotramala Mahamantrasya Vashanyadi Vagdevatarushe Namashirasi Anushtukchandase Namamukunutte Srimad Lalita Mahatripura Sundari Devataya Namahrude Kamale Aimbiyam Klim Chakte Sauhugilakam Mama Shri Lalita Mahatripura Sundari Varaprasada Siddhyatya Yabe Vinyogaha Aivangashtabhyam Namaha Klim Darjanibhyam Namaha Sauhumadhyamabhyam Namaha Aimanamikabhyam Namaha Klim Kanishtikabhyam Namaha Sauhugardakarprishtabhyam Namaha Aim Hridayaya Namaha Klim Shirade Swaha Sauhushikhayi Vishadat Aim Kavachayaham Klim Netratrayaya Goshadat Sauhu Astraya Bhatat Bhuhu Bhuvaha Suvaha Om Idikbandaha Dhyanam Sindhuraruna Vigraham Trinayanam Manikya Mauli Spurattara Nayaka Shekaram
स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रक्तरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः श्रीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीललिताम्बिकाय नमः श्रीं श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिरग्निकुण्ड सम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यानसहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता रागस्वरूप पाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्ड पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा गोविन्दमणिश्रेणीकनद्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका लक्ष्मी परिवाचलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविरचिता ताराकान्तितिरस्कारिणा साभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमनोहरा आटङ्कयुगलीभूतलपनोड्वमण्डला पद्मरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभूः विद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षद्दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भर्त्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्यचुबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता दैवेयचिन्ताकलोलमुक्ताफलान्विता कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तने भ्यालवालरोमालताफलकुचद्वयी लक्षरोबलताधारता समुन्नेयमध्यमा भारतमध्यपट्टबन्धवलित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटे किणिकारण्यरशना दामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यवार्तभोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारजानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतोणावजङ्घिका गुलगुल्फाकूर्मपृष्ठयैष्णप्रपदान्विता नखदीघिति सञ्छन्ननमज्जनतमो गुणा द्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा सिञ्जाडमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मलाळी मन्दगमना महालावण्यशेवदिः सर्वारुणानवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता कामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका मणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माडवी संस्था कदम्बवनवासिनी सागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढसिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता चक्ररथारूढमन्त्रिणी परिसेविता गिरिचक्ररथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता विद्या पराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्तबाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचितविषङ्गवधदोषिता विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरा महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्रनिर्मूलमहाबला
मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायणदशाकृतिः महापाशुपदास्त्राग्निर्दग्धा सुरसैनिका कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेव संस्तुतवैभवा हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा कण्ठादः कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधोभागधारिणी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेपरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपुरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधा साराभिवर्षिणी तडिल्लता सबरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्ति भक्तसौभाग्यदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा भवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी शाङ्करी श्रीकरी साध्वी शरच्चन्द्रनिभानना शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवद्या निरन्तरा निष्कारणा निष्कलङ्का निरुपाधिर्निरीश्वरा निरागा रागमदनी निर्मदा मदनाशिनी निश्चिन्ता निरहङ्कारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममताहन्त्री निष्पापा पापनाशिनी निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी निःसंशया संशयज्ञी निर्भवा भवनाशिनी निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युमधनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा दुष्टदूरा दुराचार शमनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्रकरुणा समानाधिकवर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमङ्गला सद्गतिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर्मृणप्रिया महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महासत्त्वा महाशक्तिर्महारतिः महाभोगा महैश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगेश्वरेश्वरी महातन्त्र महामन्त्र महायन्त्र महासना महायागक्रमाराध्या महाभैरवपूजिता महेश्वर महाकल्प महाताण्डवसाक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुरसुन्दरी चतुष्षष्टुपचाराढ्या चतुष्षष्टिकलापयी महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनी गणसेविता मनुविद्या चन्द्रविद्या चन्द्रमण्डलमध्यगा चारुरूपा चारुहासा चारुचन्द्रकलाधरा चराचर जगन्नाथा चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मरागसमप्रभा पञ्चप्रेतासनासीना
पञ्च ब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानन्दा विज्ञानघनरूपिणी ध्यानध्यातृध्येयरूपा धर्मविवर्जिता विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ती तैजसात्मिका सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोप्त्री गोविन्दरूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पञ्चकृत्यपरायणा भानुमण्डलमध्यस्था भैरवी भगवानिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभसहोदरी उन्मेषनिमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपात् ब्रह्मकीटजननी वर्णाश्रमविधायिनी निजाज्ञारूपनिगमा पुण्या पुण्यफलप्रदा श्रुतिधीमन्दसिन्दूरीकृतपादाब्जधूलिका सकलागमसन्दोहशुक्तिसम्पुटमौक्तिका पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अम्बिका अनादिनिधना हरिब्रह्मेन्द्रसेविता नारायणी नादरूपा नामरूपविवर्जिता ह्रीङ्कारी ह्रीमती हृद्या हेयोपादेयवर्जिता राजराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना रञ्जनी रमणीरस्यारणत्किङ्किणिमेखला रमा रागेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया रक्षाकरी राक्षसग्नि रामा रमणलम्पटा काम्या कामकलारूपा कदम्बकुसुमप्रिया कल्याणी जगती कन्दा करुणारससागरा कलावती कलालापा कान्ता कादम्बरी प्रिया वरदा वामनयना वारुणी मदविह्वला विश्वाधिका वेदवेद्या विन्ध्याचलनिवासिनी विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेषि क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिनी क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ता क्षेत्रपालसमर्चिता विजया विमला वन्द्या वन्दारुचरवत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वह्निमण्डलवासिनी भक्तिवत्कल्पलतिका पशुपाशविमोचिनी समृद्धा शेषपाषण्डा सदाचारप्रवर्तिका तापत्रयाग्निसन्तप्त समालादनचन्द्रिका करुणी तापसाराध्या तनुमध्या तमोपहा चितिस्तत्पदलक्ष्यार्था चिदेकरसरूपिणी स्वात्मानन्दलविभूत ब्रह्माद्यानन्दसन्ततिः परा प्रत्यक्षिते रूपा पश्यन्ति परदेवता क्षमा वैखरी रूपा भक्तमानसहंसिका कामेश्वर प्राणनाडी कृतज्ञा कामपूजिता शृङ्गाररससम्पूर्णा जया जालन्धरस्थिता ओढ्यानपीठनिलया बिन्दुमण्डलवासिनी अहो यागक्रमाराध्या रहस्तर्पणदर्पिता सद्यः प्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता तरङ्गदेवतायुक्ता षाड्गुण्यपरिपूरिता नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्वाणसुखदायिनी नित्या षोडशिकारूपा श्रीकण्ठार्थशरीरिणी प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूलप्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ता व्यक्तस्वरूपिणी व्यापिनी विविधाकारा विद्या विद्यास्वरूपिणी महाकामेश नयन कुमुदाह्लादकौमुदी भक्तहार्दतभो भेदभानुमद्भानुसन्ततिः शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्ति शिवङ्करी शिवप्रिया शिवपरा शिष्टेष्टा शिष्टपूजिता प्रमेया स्वप्रकाशा मनोवाचामगोचरा चिच्छक्तिश्चेतना रूपा जडशक्तिर्जडात्मिका गायत्री व्याहृतिः सन्ध्या द्विजबृन्द
निषेविता तत्त्वासना तत्त्वमयी पञ्चकोशान्तरस्थिता सीममहिमा नित्ययौवनामदशालिनी मदघूर्णितरक्ताक्षी मदपाटलगण्डभूः चन्दनद्रवदिग्धाङ्गी चाम्पेय कुसुमप्रिया कुशला कोमलाकारा कुरुकुल्लाकुलेश्वरी कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्परसेविता कुमारगणनाथाम्बा तुष्टिः पुष्टिर्मतिर्धृतिः शान्तिस्वस्तिमतिर्कान्तिर्नन्दिनी विघ्ननाशिनी तेजोवदी त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी सुमुखी नलिनी शुभ्रू शोभना सुरनायिका कालकण्ठी कान्तिमती क्षोभिनी सूक्ष्मरूपिणी वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी विशुद्धिचक्रनिलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वाङ्गादिप्रहरणा वदनैकसमन्विता पायसानप्रिया त्वक्स्था पशुलोकभयङ्करी अमृतादिमहाशक्ति संवृताडाकिनीश्वरी अनाहताब्जनिलया श्यामा भावदनद्वया श्रोज्ज्वलाक्षमालादिधरा रुधिरसंस्थिता कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृता स्निग्धौदनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा राकिन्यम्बा स्वरूपिणी मणिपूराब्जनिलया वदनत्रयसंयुता वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुणान्न प्रीतमानसा समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वादिष्टानाम्बुजगदा चतुर्वक्त्रमनोहरा शूलाद्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णादिगर्विता मेधोनिष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादिसमन्विता दध्यन्नासक्तहृदया काकिनीरूपधारिणी मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्ति संस्थिता अङ्कुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता मुद्गौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी मणि आज्ञाचक्रार्जुनया शुक्लवर्णा षडानना मज्जा संस्थाहं सवदी मुख्यशक्तिसमन्विता हरित्राणैकरसिका हाकिनीरूपधारिणी सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी सर्वोदनप्रीतचित्ता याकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधामधर्मेधा श्रुतिस्मृतिस्मृतमा पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी पर्वरालका विमर्शरूपिणी विद्या व्यदादिजगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी आद्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता स्थूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृणाली मित्ररूपिणी यतृप्ता भक्तनिधिः नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासना लभ्या महाप्रलयसाक्षिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी माध्वीपानालसा मत्ता मातृका वर्णरूपिणी महाकैलासनिलया मृणालमृदुतोल्लता महनीया दया मूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी
आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता षोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका कटाक्ष किङ्करी भूत कमला कोटिसेविता स्थिता चन्द्रनिभा फालस्थेन्द्रधनुः प्रभा हृदयस्थान विप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायिनी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी धरान्दोलित दीर्घाक्षीधरहासोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिः गुणनिधि गोमाता गुहजन्मभूः देवेशी दण्डनीतस्था दहराकाशरूपिणी प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी चामररमावाणी सव्यदक्षिणसेविता आदिशक्तिप्रमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेककोटिब्रह्माण्डजननी दिव्यविग्रहा क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी अक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ज्ञानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीलक्लप्तब्रह्माण्डमण्डला अदृश्या दृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दायुगन्धरा इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्तिस्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी अष्टमूर्तिर्रजा चैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैताद्वैतवर्जिता अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता शिखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा कृपा राजपीठनिवेशित निजाश्रिता राज्यलक्ष्मीः कोशनाथा चतुरङ्गबलेश्वरी राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी देशकाला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमदीमही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी कनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी नामपारायणप्रीता नन्दिविद्यानटेश्वरी मिथ्यातकदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी हास्यप्रियालयकरी लज्जारम्भादिवन्दिता भवदा वसुधा वृष्टिः पापारण्यदवारना दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकि घना घना योगपर्वतदम्भोलिर्मृत्युञ्जयगुरुप्रिया
मृत्युदारुकुठारिका महेश्वरी महाकाली महाक्रासा महाशना अपर्णा चण्डिका चण्डमुण्डासुरनिषूदिनी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः भोजोवचीर्युचिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता दुराराध्या दुराधर्षा पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मन्दारकुसुमप्रिया वीराराध्या विराट रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी मार्ताण्ड भैरवाराध्या मन्त्रिणी न्यस्य राज्यधूः त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रैर्गुण्या परापरा सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा अपल्गिनी कलामाला कामधुक्कामरूपिणी कलानिधिः काव्यकला रसज्ञानसशेवधिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा परञ्ज्योतिः परन्धाम परमाणुः परात्परा पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्रविभेदिनी मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती ब्रह्माणी ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता सवित्री प्रचण्डाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी विशृङ्खला विवेक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसुः मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगग्नी भवचक्रप्रवर्तिनी छन्दःसारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी विदारकीर्तिरुद्दाम वैभवा वर्णरूपिणी जन्म मृत्युजरा तप्त जन विश्रान्तिदायिनी सर्वोपनिषदुद्भृष्टा शान्त्यतीतकलात्मिका गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता काष्ठा कान्ता कान्तार्थविग्रहा कार्यकारण निर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कनकताटङ्का लीला विग्रहधारिणी अजाक्षय विनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी मुखसमाराध्या बहिर्मुखसुदुर्लभा त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी रामया निरालम्बा स्वात्मा रामा सुधाश्रुतिः संसारभङ्गनिर्मग्न समुद्धरण पण्डिता यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी कामगानप्रिया सौम्या सदा शिवकुटुम्बिनी सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापत्तिनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता चैतन्यार्घ्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया लोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेरमुखाम्बुजा गौरिणी
केवलानर्घ्य कैवल्यपददायिनी स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी शाश्वरी शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी धराधरसुधा धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका बन्धुककुसुमप्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमङ्गली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुवासिन्यर्चनप्रीता शोभना शुद्धमानसा दर्पण सन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशङ्करी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी योनिमुद्रा त्रिखण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा अनघाद्भुतचारित्र्या वाञ्छितार्थप्रदायिनी अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी करुणामूर्तिरज्ञानध्वान्तदीपिका आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीशिवा शिवशक्त्यैकरूपिणी ललिताम्बिका श्रीशिवा शिवशक्त्यैकरूपिणी ललिताम्बिका श्रीशिवा शिवशक्त्यैकरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीललिता देव्या नाम्नां साहस्रकं जगुः इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे श्रीहयग्रीवागस्य संवादे श्रीललितारहस्य सहस्रनामस्तोत्रकथनं सर्वं सम्पूर्णम्। श्रीं ह्रीं ऐं ॐ सिन्धूरारुणविग्रहान्त्रयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां मितमुखे मापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः श्रीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीललिताम्बिकायै नमः श्रीं ऐं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः क्लीं तर्जनीभ्यां नमः सौः मध्यमाभ्यां नमः ऐं अनामिकाभ्यां नमः क्लीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः सौः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ऐं हृदयाय नमः क्लीं जलदे स्वाहा सौः शिखायै वषट् ऐं कवचाय हुं क्लीं नेत्रत्रयाय वौषट् सौः अस्त्राय फट् भूः भुवः सुवः ॐ इति दिग्विमोघः। Are you still hearing? Okay. It should take about another 15 to 20 minutes for Alankaram to complete. Okay. After that, we can go inside. Anything? You can sit on a chair if you like. Or you probably wanted to go out. You can pick up a couple of fruits outside if you're feeling hungry. Sure. Okay.
15-20 minutes. We have some announcements to make. And before we make any first timers here, coming here for the first time? Second time. So you four for the first time. First time. Oh, a lot of first timers today. Or second timers. Where are you coming from? New Jersey. Wow. It's quite snowing, right? Are the roads okay? My classmate said he wanted to come. I told him, no, it's so snowing, don't come. But anyway, some very important event is going to happen very shortly. Where are you coming from? Local. Okay, then you have no excuse to miss this. Okay. On Tuesday night. Okay. It is a Trayodashi transcending into Chaturdashi of this month. And this is when the Mahashivaratri is celebrated. Tuesday night. Tuesday night through Wednesday morning. Mahashivaratri is celebrated. There are 3 festivals that are celebrated in a very grand fashion in this temple. One is Shivaratri. Second is Navaratri. Third, temple anniversary. Shivaratri, around February, March time it happens normally. And Navaratri, as you know, will happen normally September, October, November, sometime over there. And then temple anniversary is a kind of fixed. It happens during the long weekend of Independence Day. Earlier it used to happen in the month of May 17, 18, 19. And then after the first 12 years of establishing this temple, we performed Mahakumbhabhishekam and Atrudra Mahayagam in 2010. From that point on, it was a kind of moved to July. Normally it happens for the 3 days. Okay, these 3 festivals are celebrated in a very grand fashion for various reasons. Okay, one of the reason being particularly on Shivaratri and Navaratri, that is when the prime energy channel that runs along our spinal column, that opens up. Okay, last week or so we talked about this, but then since there are so many newcomers, we can just repeat that. Shouldn't hurt. It's easy for me, If the newcomers, then I can just go for the old stories. See, what happens is, how many of you are into, all of you are into IT or what? IT, medicine. Okay, good, for a change. You should be aware of Watson and Crick's model of DNA. The double helical structure, right? Okay? The same double helical structure is mapped. The double helical structure is called, you have pentose, sugar, adenine, guanine, thymine, cytosine, right? ATGC, right? The 4, what do they call that? Proteins? What are they? Anyway, that's going too technical, okay? So they are bonded, and then basically the protein structure, the DNA structure, protein is synthesized out of the DNA. So the DNA structure, it's a kind of a ladder that is twisted. It's a double helical structure, okay? And the double helical structure is again mapped to the energy column transcending or traversing through our spinal column. That's the human being basically, as how many of you have heard of this Sadhguru, innerengineering.org, Isha Engineering or somebody. He says, but what we have here is essentially an accumulated body, right? Well, that means from that age till this point, probably even before, from that point, how did you build this? You eat this, you eat that, you hear this, you hear that, you see this, you see that. Each of these components, as they are impinged on the main non-physical Chaitanyam, okay, it starts building up so many layers and layers and layers. But all these layers, the essential channel of energy is basically it traverses through the spinal column,
And that energy it travels through three principal channels. One is called a lunar channel, another is called a solar channel, and the central one is called the neutral channel. Okay? My Paramaguru, he refers to it as attached, detached but attached at the center. Ida, Pingala and Sushumna. Okay? These three, they won't travel along a straight line. The central one is a kind of straight path. The other two, the solar and lunar, they traverse in a crisscross fashion. If you see the Lalita Sahasranamam, they speak about Brahma Grandhi Vibhedini, Manipurantarita, Vishnu Grandhi Vibhedini, Agna Chakrantaralasta, Rudra Grandhi Vibhedini. Grandhi is a point in the body where three lines or three channels crisscross. That is, here Brahma Grandhi, there is one crisscross happens. Then Vishnu Grandhi, another crisscross happens. Rudra Grandhi, another crisscross happens. And these are basically knots. If you are into Hatha Yoga, in fact, I underwent this experience when I was in India. I was working in Bharat Electronics, Bangalore. Okay? And this guy, he's an operator. He was working in a totally different department. We got to know each other through some common connection. And he said, Sir Wango, I'll take you to Gudiyatam. So he took me to Gudiyatam and took me to his guru. And that guru is a very, very ordinary looking person sitting in a penthouse in some one corner, a very rickety, short guy. He said, come. And then he asked me to wrap a dhoti around me, and then he just he removed my shirt. He said, don't open your eyes, close your eyes. Then after that, he just came, he touched the base of my spine with his hand, slowly moved his hand and kept it on the top of my head for some time, for just a few minutes. Then I didn't feel anything. Then he removed my hand. Then he said, open your eyes. So when I opened my eyes, it was heat gushing from, suddenly there's a huge gush of heat from all orifices possible. Eyes, nose, ears, hot air coming out. So I asked him, what you did? He said, I opened the path of Kundalini for you so that the energy traverses up and down easily. Anyway, long story short, after that, he said, okay, you practice some exercise. He gave me some exercise while practicing. You know how the buses are in Bangalore, RTCs, and then the BTC or what is that? Bangalore Mahanagar Palike Chalne Samstha or something. So you get in that bus, you'll be standing, I'll be standing, I'll sense that knot. The energy trying to kick through, but there is a knot sitting there. Okay? So these knots are there in the body. Each knot, again, is basically a point of crisscross for at least three channels of energy. Okay. And during this period of Shivaratri, these knots, they open up. They release. It's not that they break. If they break, you won't be here. Okay, they just open up. When that opens up, the energy will start flowing up and down much more freely. Okay, basically that what happens is you will be able to, through this Brahmarandram, you will be able to get into communion with the infinite energy or the infinite unity pervading outside of this locus called body. Okay, you will be able to communicate with that much more freely. So during that time, any japam you perform will multiply several hundreds times. For some people, to several thousand times, several tens of thousands times over. That's why during that period, until when? Until the Trayodashi transcends into Chaturdashi. The moment it gets into Chaturdashi, it's close. That happens during that night. That's what that Shiva manifesting and all that, it is that time. So that's why during this period, we
are not supposed to waste even a single moment. Chant. Whatever you want to chant, you chant, 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 chant. It could be mantram of Lakshmi or Shiva or this Guru, Ganapati, whatever. Keep chanting. So that you get the body, once again, the locus called body. Because it's, once again, it's nothing but a several layers of physical and non-physical aspects that we accumulated over a period of time. So this body will reap the benefit of that effect. So that's why we celebrate Shivaratri in a very, very grand fashion. We make sure of two, probably in fact 3 things on Shivaratri. Number 1, we will not let you fall asleep. Okay? Continuously you'll be good. This is an engineering architecture. Actually, what you see, each station represents one chakra in the human body, starting from the Homakundam. And at the bottom, there are 3 copper pipes running inside. Each pipe has a silver wire in it. They form the Ida, Pingala and Sushumna, the 3 energy channels I spoke about. They form those channels connecting to the Mula Pratishta, Mula Sthanam. Okay, so essentially the whole structure is like a person lying down. So what you do on Shivaratri, you will keep on going circles around this entire installation. Okay, because whatever type of upasana we perform, say in the Mooladharam, it represents the core of it's called the mantle of the earth, where you will have a lot of sanchobhanam, going back and forth, searching for things that they are not able to find. Lot of heat. Core of the earth, right? That's what the Homakundam is. Dhvajastambham, that's where we perform Tarpanam, water principle. And then Mula, the Manipuram, the Balipeetham, that's where we surrender our ego, we offer our ego as Bali. Where it's supposed to, that's Manipuram, that's where you digest everything, right? To generate the pure Chaitanyam. Okay, that is the Balipeetham, Manipuram. Then Nandi form, who is actually the personification of rhythm, the heart chakra, Anahatam. And then, what is that? The Mahameru over there, that would form the Vishuddhi. Okay, the Prana Shakti is concentrated over there. In fact, Vishuddhi is the place where it is a nexus beyond which there is no sound. Below which, from that point, all sounds will start happening. That's why the 8 Vagdev, Vashinyadi Vagdevatar, those 8 Vashinyadi Vagdevatas, they are supposed to reside here. Each Vagdevata control one set of syllables in the Aksharamala. From A to Aha, Vashini. Ka to Nga, Kaka Gahanga, Kameshwari, like that Modini, Vimala, Aruna, Jaini, Sarveshwari, Kaulini. 8 Vagdevatas will be sitting over there. And they will represent the 8 triangles at that level in the Sri Chakram or the Mahameru. So there is some method to madness, there is some engineering involved in this. Okay? So, all said and done, so that would form the Vishuddhi. And then mothers, there is a small Shivalingam after that, that would form the Lambikagram, which we call normally uvula in the human body, that portion. Okay, then from Vishuddhi to that uvula, that portion is called the Dharakasham, Dharakasha Rupini. We'll say in Lalitadasana that Dharakasham is that place. When Upasaka is performing his whatever, be it penance or whatever, when the Kundalini rises and crosses the Vishuddhi, and while it is traversing through the Dharakasham, he will not sense the progress. Until that point, he's okay, I'm getting there. But that place, he'll be totally lost. He'll be scared at that time. Hey, what's going on? That's when Guru's help is sought. Once he crosses the Dharakasham, he gets to the Agna Chakram. Agna Chakram is the place where the so-called desire is totally destroyed. It's done. That guy does not want to progress, does not want to recede. He just loses interest in everything. Why don't you sit here for some time? Once the Alankaram is done, you can go inside. That's cold out there. You can't sit there. Come on.
So, Agna Chakram. Okay? The Agna Chakram here is represented by mother sitting on Shiva. Shiva Kare Manche Parama Shiva Paryankanayam. That would be the Agna Chakram. And then the Mula Pradishta is the Sahasrara. Around this installation, while the puja is going on, there are some lingams installed at each place. Puja will be going on all the time. Okay? And whoever is here, they will be just going around this installation offering bilvam at every installation of Shiva. There are so many Shiva lingams. And why bilvam? Tridalam Trigunakaram Trinetrancha Triyayudham Trijanma Papa Samharam Eka Bilvam Shivarpanam. So bilvam, it is considered to be so sacred, offering of each bilvam, whether you probably may be thinking something, but you offer bilvam, you get the grace of Shiva. Koti Kanya Mahadanam Bilaparvata Kotaya Kanchanam Kshiradhanena Eka Bilvam Shivarpanam. So many benefits you will get. So, when whoever is here, they will make sure that they keep going circles, keep on offering the bilvam. That is one thing. That is, we will not let you fall asleep. Number 2, we will not let you idle around. You will be doing the puja or abhishekam or chanting, whatever. Because this is a participative temple. Puja is not a mono action by the priest, tearing his guts out while everybody else will go into the basement. In that temple, Pongal they make very nice. So if you go to the temple for Pongal. No. Here, we expect you to participate. Okay? And number 3, we will not let you starve. Even if it is Shivaratri, we will not let you starve. Because our philosophy here, the tenets, we do not believe in fasting. We believe that Mother resides in each one of us. And if we starve, if we let this body starve, we are letting the Mother sitting inside starve, and we have no right to do that. Except for that one half day when you are supposed to perform Pitru Karmas, except for that period, every other this one, we make sure that you are fed reasonably. We do not want you to eat so much that throughout the Shivaratri Jagaram you will keep on burping your way through. No. You will have to eat just so much that your systems can sustain and your focus is not lost. So, come back on Tuesday night. Don't miss it. You, I don't know. It's too far off. But then still, it's not something that you would like to miss. See, come on, Chakar Mat doesn't really. Right? Just come, declare sick in your office, and then Tuesday night and Wednesday. Wednesday, of course, you'll be, after the puja is over, you may feel a little groggy, but still, just stay up till the afternoon, have some lunch here, and then come. Okay? I know you are reluctant, but you have an opportunity. With that said, this place is a participative temple. We expect everybody to participate. In fact, if you had come a little sooner, you would have done Abhishekam to to the Mula Pratishta. Whoever comes here will have a chance to perform Abhishekam. Okay? And if major homams happen, whoever comes here will have the opportunity to offer Ahutis. Okay? And whoever, are we done? Okay. Whoever comes here have an opportunity to chant. With that said, Alankaram is complete, starting with the sponsors, followed by the first timers, followed by the rest. Gradually move inside and converge towards the center. Please stay away from the sannidhis of Bhairava, Kamakshi and Bhagavan Satya Sai Baba. Because we will come there to do puja. At that point, we don't want you to just move from there. Okay? Please, get inside. We will do the final arati. After the final arati, Mahaprasadam will be served. Shri Guru Bhyo Namaha.
शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यद्विघ्नमत्राद्यपारिषद्याः परिषदम् विघ्नं विघ्ननियतं विघ्नस्तेनं समाश्रये विघ्नध्वान्तनिवारणं च करोमि विघ्नाकरीहव्यपाद विघ्नव्यालकवनत्वगरुडो विघ्नेदपञ्चाननः विघ्नोत्तमविघ्नभेदं कवि विघ्नाद्विघ्नोद्भवः विघ्नोद्भवगणमत्तजं दभोनो विघ्नेश्वरः स्वामिनः
माधव विधातृमन्मथस्कंद नंदीन्द्र मनुचंद्र कुबेर अगस्त्य क्रोध भट्टारक विद्यात्मिके कल्याण तत्वत्रय रूपे शिव शिवात्मिके परिपूर्ण ब्रह्मशक्ते श्रीमद्द्वैता महात्रिपुर सुंदरी तव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। निर्माल्य देवताभ्यो नमः। दिन दिन ना तरगड़ दिन दिन ना तत् दिन दिन ना कृतकदाम निकट दो तरगड़ तत् दिन दिन ना तरगड़ दिन 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 ना कृतकदाम निकट दो तरगड़ तत् दिन दिन ना कृतकदाम निकट दो तरगड़ तरगड़ दिन दिन ना कृतकदाम निकट दो तरगड़ कृतकदाम निकट दो तरगड़ दो ताम निकट दो तरगड़ दो दिक दो तरगड़ दो कृतकड़ तक दो तरगड़ दो तक दो दो ततिंग ना तुम ता ततिंग ना तुम ता ततिंग ना तुम दिन ततिन तक दिन ततिन तक दिन कृतक दिन तक तत ताम निकट दो तरगड़ दिन ततिन तक दिन तक दिन कृतक दिन तरगड़ दो तरगड़ दिन ततिन तक तत ताम निकट दो तरगड़ दिन कृतक दिन तक तत ताम निकट दो तरगड़ तत ताम निकट दो तरगड़ दो तत ताम निकट दो तरगड़ दो ताम निकट दो तरगड़ ताम निकट दो तरगड़ तत ताम निकट दो तरगड़ तत ताम निकट दो तरगड़ तलांग दो तलांग दो ताम निकट दो तरगड़ तत ताम निकट दो तरगड़ तत ताम निकट दो तरगड़ तलांग दो तलांग दो तरगड़ ताम निकट दो तरगड़ तत ताम निकट दो तरगड़ तलांग दो तत ताम निकट दो तरगड़ तलांग दो तत ताम निकट दो तरगड़ तलांग दो तत दो तलांग दो तत दो तलांग दो तत दो ओम इंद्रिये नमः इंद्रियेश्वराय नमः शिवाय नमः शिवाहनाय नमः विद्यानपरायणाय नमः कालवास्येष्टाय नमः मृदंगवाद्यगुणाय नमः आदिविद्यासुन्दराय नमः तत्पुरुषाय विद्महे तत्पुरुषाय धीमहि तन्नो नन्दिप्रचोदयात् इंद्रियेश्वराभ्यो नमो भूभ्यो स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भवदेशेषावदेमास्तो ज्योतिरसंसम्पन्नं भूभ्यो स्वः रक्तज्वा कैंफर रक्तज्वालजटाधरं श्रीमलं रक्ताङ्गतेजोमयं धृत्वा शूलपाचकपालनमुरकं लोकस्य रक्षाकरं निर्वाणं शिरवाहनं त्रिनयनमानन्दकोलाहलं वन्दे सर्वभूतप्रेतपिशाचनादवडुगं क्षेत्रस्य पालं शिवं सुवर्णध्वजाय विद्महे त्रिशूलहस्ताय धीमहि तन्नो भैरवः प्रचोदयात्। क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। क्षेत्रपालं महादेवं भैरवाष्टकमूर्तिं दक्षिणकालियुगं वन्दे ऐक्येश्वरोत्तमा कालकपालकल्पान्तक्रोधनोद्योन्मत्तचण्डसंहारज्ञानस्वर्णाकर्षणभैरवाय नमः। महानैवेद्यं निवेदयामि। राजाय मुक्तिदाहिने नमो वै श्रवणाय विद्महे नमो कामाय वै श्रवणो ददातु देवाय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। Come to Kamakshi. कामाक्षी नमः। कनकदाटंकिन्ये नमः रत्नदाटंकिन्ये नमः मांगल्यबीजमहिमायै नमः निर्लयाय नमः मरकतरत्नाभरणाय नमः महापदकाय नमः कनकचिन्ताकायै नमः
ओड्यानपीठनल्याय नमः पद्मासनस्थाय नमः पंचपुष्पबाणाय नमः शुकहस्ताय नमः अंकुशहस्ताय नमः नवरत्नमौल्ये नमः चंद्रशेखर्ये नमः पाशहस्ताय नमः इक्षुदण्डधनुर्हस्ताय नमः दूर्वासमहामुनिपूजिताय नमः कामकोटिनलयाय नमः मातृदेव्यै नमः कल्याण्यै नमः परदेवतायै नमः परमकारुण्यविग्रहाय नमः कामाक्ष्यै नमः न गुरोरधिकं मोक्षं न गुरोरधिकदैवतं न गुरोर्यदहं नास्मि तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानशक्तिरसत्करः ज्ञानदानपरायणः मेरुराग्निपदाश्रितः तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानाम्बिकाय विद्महे चैतन्यानन्द धीमहि तन्नो गुरुर्प्रचोदयात्। ऐं ह्रीं श्रीं कुरुकुल्लायाः कुरुकुल्ले क्रीमसर्वजनं वश्मान क्रीं स्वाहा स्रैं निष्करीमस्तसौः महापद्मवनान्तस्ते कारणानन्द बलिमण्डपे सर्वभूतहिते मात एह्ये हि परमेश्वरी कुरुकुल्लादेवीं प्रतिसहितमावाहयामि स्त्यायामि सम्पूजयामि नमः। प्रत्यालीढमुद्रान् प्रदर्श्य ॐ हंसः शिवः सोऽहं हंसः हसकफ्रें हसक्षमलवरयूं सौं सहक्षमलवरयीं सहौः स्वरूपनिरूपणहेतवे स्वगुरवे श्रीमज्ञानाम्बिकासमेत श्रीचैतन्यानन्दनाथ श्रीगुरु श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। बलिद्रव्याय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कुरुकुल्लायाः कुरुकुल्ले ह्रीः मम सर्वजनं वश्मान क्रीं स्वाहा कुरुकुल्लाय स्वाहा कुरुकुल्लादेवीष्टबलिर्नमः प्रत्यालीढमुद्रान् प्रदर्श्य सौभाग्यदण्डिनी मुद्रान् प्रदर्श्य सर्वदेवेभ्यो सर्वगणेभ्यो सर्वयोगिनीभ्यो सर्वविघ्नकर्तृभ्यूतेभ्यो हुंफड बाणमुद्राम् अवकुण्ठनमुद्रां कामधेनुमुद्रां सर्वयोनिमुद्रान् नमस्कारमुद्रान् प्रदर्श्य आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।
Rajeshwari. मध्ये शिवेन सह शङ्करी नैषत्वं महादेवी सर्वैरावरणैः सह। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे। पापोऽहं पापकर्माणां पापात्मा पापसम्भवः। त्राहि मां कृपया देवि शरणागतवत्सले। मत्समा पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समा नहि। एवं ध्यात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। Okay. The puja has come to a conclusion. Okay, for the newcomers, the tradition here is you will go around Ambai, and from the right side there will be a bowl of kumkum. Pick up a pinch, no more than that, with your thumb and middle finger, and place the kumkum on the left big toe of mother. Her left foot is down. On that foot, on the toe, put the kumkum, do a namaskaram, say hello mommy, and then come out, have Mahaprasad. Okay, and if you have mats underneath you, kindly fold the mats, don't roll them. Fold the mats and place the mats near the Utsava Ganapati corner. Thank you so much. The sponsors have got one more chore to perform. Vilasaya will lead you the way. Ipo ennoda varango. Come. Vilasaya.